ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ನೌಕೆಯು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಯಾನದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೋ ಸದ್ಯ ಆದಿತ್ಯನತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ-L1 ಉಪಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ದಿನಕರನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೇನು ಎಂದು ಅರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನವೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮಾನವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವೇಳೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. Craft in the South Polar region. I'm sure many of you were eager and proud to by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य-L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 कर्टेन रेजर।
PSLV-C57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya-L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the Sun and how it impacts the heliosphere. The Sun, which is the center of our solar system and has Aditya-L1 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದರ್ಜೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿ L1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಈ 7ರ ಪೈಕಿ 4 ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈ ಕರೋನಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ, ಸೌರಜ್ವಾಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಕೆಟ್ PSLV ಮೂಲಕ ನೌಕೆಯ ಉಡಾವಣೆ ಇಂದು 11:50ಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. fluctuations in solar irradiance.
C57 Aditya-L1 SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू ने minutes and counting. इस मिशन का Hereby authorize us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system redundant chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा में ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 19.2 ಮಾಹಿತಿ डिग्री ಪಡೆಯೋಣ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಧಾನ के झुकाव के ಸಂಪಾದಕರಾದ साथ ಹೊನ್ನಾಳಿ अंतक्षेपित किया ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ जाएगा। ಅವರಿಂದ। इस कक्षा ಹೊನ್ನಾಳಿ में निर्धारित ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ। ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಭಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ। ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ? ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ. ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ವಾಚ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಈಗ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದು 125 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷೆ ಇದು. ಆ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ 125 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ನೌಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು, ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೋರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಕೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಉಡಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು, ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಪರಿಭ್ರಮಣದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಿಶ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆದಿತ್ಯ-L1 ನೌಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ.
ಇಸ್ರೋಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ. Of the lower stage by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated, which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last fourth stage of the rocket, together with the Aditya-L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Koru. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है, सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ನೌಕೆಯು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಯಾನದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೋ ಸದ್ಯ ಆದಿತ್ಯನತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ-L1 ಉಪಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ದಿನಕರನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೇನು ಎಂದು ಅರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನವೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮಾನವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವೇಳೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ-L1 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದರ್ಜೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿ L1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪೆಲೋಡ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಈ 7 ಪೆಲೋಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಪೆಲೋಡ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಪೆಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈ ಕರೋನಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ, ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಇಸ್ರೋಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಕೆಟ್ PSLV ಮೂಲಕ ನೌಕೆಯ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा. T-3 minutes and counting. यह PSLV-C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है. इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे. लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा. इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है. वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा. रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है. यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा. इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं. यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है. All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए. अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा. VHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent liftoff of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. +15 seconds. PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ +20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने. Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का. आप देख रहे हैं PSLV-C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य. The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust.
The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं, PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का।
वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV-C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third Vehicle in stage of separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Vehicle पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station.
यह कोस्टिंग फेज़ लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से
इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य-L1 के नितंभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon, ಸರಿಯಾಗಿ 11:50ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ L1 ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು 125 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡುವ ತಾಣ ತಲುಪಲು ನೌಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಗಳು 125 ಆಗಿದೆ. L1 ಲಾಂಗ್ರೇಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಾತಾವರಣ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7.